things. But those things are not very important in the sense that they are not very important for the long run. They will be used in this chapter and this chapter only. I mean, those concepts are not going to be used in any other chapter. And since atomic structure is a very large chapter, what happens? The part one. जो है ना, part one is very much you have to learn too many formulas and many new concepts are there. ठीक है. तो part one जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी वाला, so that is so intense. When part two comes, that is quantum numbers and SPDF orbitals, those things, which are going to be used in the next chapter, periodic properties. They are going to be used in the next chapter, chemical bonding also. Part two is more important in the way that it is going to be used in multiple chapters. The concepts in part two will be used in many chapters, in 11th also, in 12th also. तो पार्ट वन में इतना बच्चे ये कर लेते हैं, इतना बड़ा लगने लगता है चैप्टर कि पार्ट टू आते आते फिर वो थक जाते हैं. दे डोंट have that much intensity to grasp and everything. So that is why in both of these part one is not dependent on part two. किसी को भी पहले लिया जा सकता है, कुछ मुश्किल ये नहीं है. That is why I tend to do part two first. उसके बाद फिर हम part one करते हैं. ठीक है. So अब लेकिन स्कूल में तो ऐसा नहीं होता है. बेसिकली स्कूल में I have to teach you guys in a way that लॉन्ग रन में फायदा हो, है ना. आई कैन रेफर बैक टू समथिंग एंड यू शुड रिमेंबर इट. ठीक है. तो हम देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा. यूनिट टेस्ट के लिए तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं आपको. माई मेन फोकस इज योर एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी हाफ ईयरली, और फिर जो आपके पास जो 11th वाला होगा, उससे बड़ा जो मेरा गोल है ना कि आपके 12th में नंबर है. यू मे हैव सीन पीपल हु आर गेटिंग वेरी लो मार्क्स इन 11th स्टैंडर्ड, बट उनका क्या होता है 12th स्टैंडर्ड फिर मार्क्स सही आते हैं. तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा. आइदर यू डू इट योर सेल्फ और यू कैन इवन लीव इट फॉर नाउ. यूनिट टेस्ट में कुछ पोर्शन आप छोड़ के, जितना पोर्शन जा रहे हैं उतना अच्छे से करके जाए. बाकी आप अगर छोड़ना चाह रहे तो उसको छोड़. ठीक है. थोड़ा लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 11th क्लास में. ये हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं. और फिर उसके बाद लेकिन क्लास मिस नहीं होना चाहिए मेरा. अगर आप क्लास मिस करेंगे विदाउट एनी रीजन कि सर मेरा एग्जाम है, हम क्लास नहीं करने आएंगे, तो फिर हम आई विल आस्क द टीम टू लाइक चेंज. यू कैन चेंज टीचर्स देयर. इस बात तो लाइक आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी लीनियंसी. इसमें तो लीनियंसी हम नहीं देने वाले कि क्लास आप एब्सेंट करने वाले. क्लास अगर एब्सेंट अगर आप कर रहे हैं तो कोई मेडिकल रीजन होना चाहिए, या फिर आप घूमने उमने जा रहे हैं तब ठीक है. ये यूनिट टेस्ट के लिए हमको नहीं चाहिए कि आप क्लास मिस करें. यूनिट टेस्ट के लिए क्लास मिस कीजिएगा, फिर मेरी क्लास आप रिवाइज. इफ यू वॉच द लेक्चर, मेक द नोट्स एंड एवरीथिंग, पता चल जाता है 2-3 क्लास के बाद कौन बच्चा कर रहा नहीं कर रहा. तब तो ठीक है. देन आई विल चूज विच किड आई हैव टू टेक. अदरवाइज मुश्किल है फिर. ठीक है. इन सब चीजों को थोड़ा सा रखिए. थोड़ा सा रूडली अभी बोलते रहे सवेरे से कि आप लोग लाइक आई टेंड टू, क्या बोले हम, आई टेंड टू लाइक जो प्रॉमिस होता है ना वो हम अंडर प्रॉमिस करते हैं, ज्यादा प्रॉमिस हम नहीं करते. बट आई टेंड टू ओवर डिलीवर, है ना. आई विल गिव यू मोर. ठीक है. तो मार्क्स थोड़ा धैर्य रखिएगा. ठीक है. और थोड़ा मेच्योरिटी से काम लीजिएगा. इवन लाइक बी फ्रैंक विद पेरेंट्स आल्सो की द रीजन यू आर हियर इज बिकॉज स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ाया जाता है, राइट. अगर किसी के स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाता है फिर वो बच्चे ट्यूशन या फिर कहीं और नहीं जाते. तो एंड मेन थिंग इज की इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम अगर नहीं होगा किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो फिर सब्जेक्ट बढ़िया नहीं होगा. ठीक है. सो दिस फॉर एवरीवन. जसनीम, शाइमा, जैनब, आई थिंक सभी का आपके जो समर वेकेशन होता है ना मई में आप लोग का, आफ्टर मई विल हैव समर वेकेशन. तो बिफोर समर वेकेशन यू विल बी हैविंग अ यूनिट टेस्ट. उसमें टेक माई गारंटी दैट वट एवर आई हैव टॉट इन द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, वो आप लोग को सारा का सारा आ जाएगा. अच्छा, बाय द वे जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एक एक करके बताइएगा. सिग्निफिकेंट फिगर्स, हैज दिस टॉपिक बीन टॉट इन फिजिक्स? जसलीम, शाइमा, जैनब? No, sir. ठीक है. जसलीम, व्हाट अबाउट यू? Sorry, sir. Significant figures. This No, topic, sir. significant figures. But this is there in the unit dimension and measurement, right? या नहीं है? No, they told it's cancelled. अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स वहां से हटा दिया, यानी कि हमको पढ़ाना था. ठीक. नहीं तो आज एक दिन और बस. ठीक. आई विल टीच यू सिग्निफिकेंट फिगर्स आल्सो देन. वो फिर एक क्लास और लग जाएगा. देखिए सभी का है कि सभी का नहीं है.
पता नहीं बच्चों को क्या ही रहता है। फिर चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव शाइमा जसलीन एजम। शाइमा, हाउ इज योर तबीयत? हाउ इज योर हेल्थ? आर यू वेल? आर यू गुड नाउ? आपकी तबीयत खराब थी ना लास्ट टाइम? चैट बंद कर दिया आपने, माइक ऑन कीजिए। चैट तो हमने बंद कर दिया। चैट पे बात नहीं हो पाएगी। नो चैट, इफ यू वांट टू टॉक यू हैव टू टर्न योर माइक ऑन। हम्म। तो शाइमा, यू आर नॉट हियर और व्हाट? यस, टेल मी शाइमा। Sir, can you hear me? या आई कैन हियर यू। माइक ऑन करके रखिएगा तब तो बात हो पाएगी। माइक तुरंत बंद कर देते हैं बच्चे। Sir, I'm good. अच्छा, तो ठीक हो गई आपकी? चलिए, moving on. So from the last lecture, we have got some idea regarding reactions that are going to happen. है ना? How the reaction occurs, we have that idea right now. We are going to apply that using a. I hope you guys have revised the last lecture. अच्छे से आपने revise किया होगा. Whatever problems we did, I hope you did it again in the revision time. अभी एक सवाल है, आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। ध्यान से देखते हैं इसको। We have a reaction in which what is happening? A plus B2. So A is an atom, you can see. It's individual. Please don't write it now. ध्यान समझिए, उसके बाद लिखिएगा. Then we have B2, right? Then we have what? We have B2 here. Now this B2 is a molecule. You can see that. A plus B2, it is giving you what? AB. AB2. ठीक है? ध्यान सुनिए. चल, आइडेंटिफाई द ओहो, अच्छा ठीक है ठीक है, एक सेकंड, माय बैड। अभी इस सवाल को नहीं लेते हैं। आप लोगों को लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ाया है, इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू दैट। नाउ गोइंग बैक टू द लास्ट क्लास, आई स्टार्टेड विद दिस पॉइंट दैट, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा, stoichiometric calculation, when the amount of only one of the reactant is involved, then MCR of reactant is equal to MCR of product. This is how you are going to start it. Now write another point with me. Please write this with me. Please write this with me. When the amount of two or more of the reactants is given, then calculate MCR of each reactant, of each reactant. The reactant with least value of MCR will be called, is called मतलब कि will be called, ये हम लोग कहेंगे, will be called limiting reagent. Limiting reagent, ठीक है? Limiting reagent I will denote by LR. So first of all, you will calculate. See, it is the same thing. Basic way here. You, when you have two or more, in the amount of two or more reactant is given, then what we are going to do, we are going to identify what is the limiting region. How to identify the limiting region? Calculate the MCR. The same thing. Mole to coefficient ratio. If you calculate, then you are going to get what? You are going to get some values. Compare those values. जिसका सबसे कम होगा, the reactant which is having the lowest value of MCR will be called what? Limiting reagent. Once you have got the limiting reagent, then MCR of limiting reagent is equal to MCR of product. ठीक है? So when you have two or more reactions, इसको प्लीज जल्दी से लिख लीजिए. Yes, sir.
All of you done? Just raise your hand if you're done, guys. चलो साथ साथ लिख रहे तो हो ही होगा. Just raise your hand. Okay, Shaima and Zainab. Keep your hand raised, guys, please. Okay, don't lower your hand. Waiting for Shaima and Zainab. समझ में आया गाइस? ये सोनो एक बार यस और नो बोल देंगे. जसलीन, सबीहा, जैनब एंड शाइमा. ये सोनो Yeah. कैसे करना अभी छोड़ दीजिए, है ना? कैसे करना है उसको छोड़िए अभी. फर्स्ट व्हाट वी विल डू, टेल मी. वी विल कैलकुलेट द एमसीआर ऑफ. ठीक है, बोलिए. वी विल कैलकुलेट एमसीआर ऑफ व्हाट? Reactant. All the reactants, है ना? Whoever, like whatever the reactant, whatever who, like we have reactants, we have multiple reactants, and we have been given the amounts of two or more reactants, that this many grams, this many liters, this many moles, this many particles. Okay. So if you have been given this data, the amount of something, two or more reactants, then you will calculate the MCR of all the reactants, and then the one which is having least value, that will be limiting reagent. Then you will write MCR of limiting reagent is equal to MCR of product. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखिए. What is limiting reagent, by the way? So limiting reagent is that reactant which gets completely consumed. What happens? Which gets, tell me. क्या कहा हमने? Completely consumed. Completely consumed in a reaction. Yes, well, it gets completely consumed in the reaction. ठीक है, so please write with me. The reactant which is completely consumed in a chemical reaction is known as limiting reagent. ठीक है, anyone still writing? Anyone still writing? No, sir. Sorry, I'm ready. चैट हम खोलेंगे जब हमको मर्जी होगी. Like when I will need the answers ना. I don't want you guys to speak the answers ताकि बाकी लोगों को पता चले. Then I will open the chat. Then chat. Otherwise, तो then guys, yes or no? ठीक है. Yes or no बता दे. Those who are writing, are you guys done? Okay, this thing is done. Just let me know if you're still writing. Okay, someone is still writing, please let me know. Otherwise, please copy this down. Sample question. Please write 16 gram of CH4. Please write this question with me. Reacts with 16 grams of O2. Calculate the amount of CO2 and H2O bond. ठीक है. So the reaction is the same reaction that we saw earlier. CH4 plus O2 is going to give you CO2 plus H2O. I hope you guys remember from the last lecture that stoichiometry calculation. Please don't write this now. समझिए. Keep your pen aside and try to understand and turn your mic on. Sabiha, Zainab, Jasleen, and Shaima.
Please turn your mic on. Jaslin has done. Sabiha, Shaima, Zainab, जल्दी जल्दी जल्दी. Waiting for you, Sabiha. बाकी लोग माइक ऑन करके रखें. Sabiha, Shaima, what happened? Sabiha and Shaima, जल्दी. See you guys. ध्यान से देखिए. चलिए बहन, what happened, Sabiha and Shaima? Sabiha, am I audible? Shaima, what happened? Why your mic is not on? Sabiha, what happened to Sabiha? Sabiha is not in the class. Okay, let me just inform the team about it. Sabiha. अच्छा, see, there is one thing that I want to say you guys. हमको नहीं बताया गया, ठीक है? You tell it on the team that कि टीम ने हमको नहीं बताया that you are not well, but this is for everyone. If you have my class, आप हमको मैसेज कीजिए like why do you have my number, ठीक है? If you guys want to say anything regarding the class कि आप आज क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे, लर्निवियो को बताने की जरूरत नहीं. You have to message me. Okay? If you want anything also, like then I can refer you to Learnivio sometimes. I understand सभी, हाँ आप झूठ नहीं बोल रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, बट आप ना हमको मैसेज कर दिया करें. ओके? हाँ ठीक है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है. चलिए, दिस वाज द फर्स्ट टाइम. चलिए, मूविंग ऑन. सो बिकॉज ऑफ सबिहा यू गाइस हैव द चैट्स ओपन नाउ. चलिए बताइए, बाकी लोग लेकिन माइक ऑन रखेंगे. शाइमा, टर्न योर माइक ऑन नाउ. बैलेंस करिए जल्दी से. हाउ मेनी CH4, जल्दी बताइए. हाउ मेनी CH4? कीप योर पेन असाइड, पेन नहीं चलाना है, ऐसी बताइए. 1, 1 CH4. हाउ मेनी O2? 2, 2 O2. हाउ मेनी CO2? 1, बाकी लोग को नहीं आ रहा. शाइमा एंड जसलीन, Yes, sir. हाउ मेनी H2O? 2, 2. देखिए यही, आई मीन दिस इज द पॉइंट वेर यू आर गोइंग टू लर्न. ठीक है, या ये एक पॉइंट है. बाकी नेक्स्ट पॉइंट व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न इज व्हेन यू हैव योर नोट, व्हेन यू हैव द क्वेश्चन पेपर तो नहीं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, एंड देन यू आर सॉल्विंग ऑन योर ओन. सॉल्विंग ऑन योर ओन तो आपसे होगा नहीं, बहुत रेयरली अब बच्चे सॉल्विंग ऑन योर ओन करते हैं. आप क्या करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, कुछ होगा नहीं, गूगल मार लेंगे. ओ अच्छा, ओ लाइक दिस, ओ ओके 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 ओके, फिर अगला सवाल बैठे करने के लिए, फिर ये भी नहीं हो रहा है यार. फिर से गूगल किया आपने, फिर आंसर देख रहे हैं, ओ ओ अच्छा, ओके ओके ओके, लाइक दिस, ओके नाउ आई अंडरस्टूड. भाई दिस इज नॉट लर्निंग. ठीक है, until unless you are going to use your brain in order to get to the next step. स्टेप्स को समझना मुश्किल नहीं होता है, how to get to the next step, that is more important. चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम वापस. हाँ, you tell me the react, how many reactants do we have whose amount is given? Amount of how many reactant has been given? 1. No, Which 2. reactant? हाँ, so here we have been given the amount of CH4. भाई साइमा, जसलीन, आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोग की? Are you guys writing? No, sir. Jasleen. So, No, sir. Shaima, what about just both of you guys are not writing? The answers तो आना चाहिए ना? ठीक है, yes, सभी हाँ correct. ठीक है. So see here, we have the amounts of how many reactants? बोलो, तुरंत आंसर आना चाहिए ना? You should. We have the amounts of how many reactant? 1. अरे 2 है भाई, सवाल तो बड़े क्या. रीड द क्वेश्चन भाई, रीड द क्वेश्चन. ये तो फिर हम पढ़ाने लगेंगे ऐसे ही. 16 grams. नो नो नो, आप अपने खुद से पढ़िए ऐसे लाउडली. आई एम नॉट आस्किंग टू रीड यू लाउडली. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि क्या दिया हुआ है. 2, sir.
I hope all of you have read the question. So the amount of how many reactant has been given? Oxygen and CH4. Oxygen and CH4. So how many reactants? 2. 2. So when we have two reactant, when we have the amount of two reactant, then what do we do? Product is Just going like just लिखा है. When more read that point, then you will understand. What do we do? बाकी लोग बताएं. चलिए देखिए, खैर हटाइए, छोड़िए. समझिए इसको, ध्यान से देखिए, समझिए, फिर अगला सवाल कीजिएगा खुद से. ठीक है, प्लीज सी अगेन, प्लीज सी. First thing that you are going to do is 16 gram. What is 16 gram? It is a mass of CH4. So mass of CH4 is equal to 16 grams. Have a habit of writing everything. Reacts with 16 grams. What is 16 gram? It is the mass of O2. So mass of O2 is equal to 16 grams. So once we have got the masses, what we can calculate? We can calculate the MCR. MCR of CH4. Moles to coefficient ratio. What is moles? Moles is the given mass of CH4 divided by the molar mass of CH4. Divided by molar mass of CH4 multiplied by stoichiometric coefficient. In the denominator, you will be having stoichiometric coefficient. That is equal to 1. So this will be equal to what? 16 divided by molecular mass of CH4, 16 into 1. This is equal to 1. MCR of CH4 is equal to 1. Then you will calculate MCR of O2. That is equal to how much? Mass of O2 divided by the molar mass of O2 multiplied by stoichiometric coefficient. What is the stoichiometric coefficient? 2. 2. So this will be equal to 16 divided by mass of 32. O2 is equal to how much? 32. 32. Multiplied by, yes, very good. 32 multiplied by 2. Makes sense? So 16 twos are, and this will be equal to 1 by 4. So tell me, which is smaller, 1 or 1 by 4? Which is smaller? 1. What? What is small? 1 by 4 is smaller. Yes, very good. Correct. So I will write MCR of CH4 is greater than MCR of O2. Therefore, O2 is limiting reagent. बात समझ में आ रही है? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है? ठीक है, steps देखते रहिए, steps देखते रहिए. I mean, you just have need to apply these steps only. MCR of first reactant, MCR of second reactant. If we had third reactant, we will calculate the MCR of third reactant. Then we compare the values of MCR. Then we determine the limiting region. How? The MCR of species, which is what the least value is going to be the limiting region. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? Now we need to calculate the amount of CO2 and H2. So first of all, we are going to calculate first CO2. ठीक है? So please write. Don't write. Listen. For CO2, what I will write? MCR of O2 is equal to MCR of CO2. So see, they're asking what is the amount. So amount can be many things, but the best thing to write amount in is grams. Okay. So generally, yes, Anna, no problem. No problem. Okay. If you give me if you tell me, sir, I will not be able to speak, then it's not a problem. ठीक है ना? But ऐसे mic on करके थे आप बिल्कुल. ठीक है. I was also not told by Learnivio. That's I will ask the team that they should inform me. ठीक है. MCR of O2 is equal to MCR of CO2. अब ध्यान सुनिएगा जरा. MCR of O2 कितना आया था बताइए? जल्दी. What was MCR of O2? 1 by 4. Yes, very good. 1 by 4 is equal to MCR of CO2. What to write? MCR of CO2, mass of CO2 divided by molar mass of CO2 multiplied by what is the stoichiometric coefficient? 1 hai, right? In the reaction it is 1. So multiplied by 1. Okay? So I can write this as mass of CO2 will be equal to molar mass of CO2, that is equal to how much? 44 divided by 4. है ना? 44, you must have this in your notebook. This is equal to how much? 11 grams. आई बात समझ में? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Similarly, for H2O. For H2O, what we are going to do? Same thing. MCR of O2 is equal to MCR of H2O. MCR of O2 is 1 by 4, which is equal to MCR of H2O. Mass of H2O divided by the molar mass of H2O multiplied by the stoichiometric coefficient was 2 in this case. No? ठीक है.
So we will get mass of H2O is equal to molar mass of H2O is 18 into 2 divided by 4 to 18 is equal to 9 grams. ठीक है Sir, छापी I have a doubt. जी बताइए टीम जैनब Both of them, like the mass of CH4 and O2, can be calculated together. I don't understand what are you saying mass of So 1 minute. Both the mass we calculated, right, 11 gram and 9 gram. It can be calculated together rather than different ones. I mean in the question it is asking mass of CO2 and the amount of H2O. So you, what are you asking? I don't understand. Like you want to say the answer is 11 plus 9 that is equal to 20 grams. This No, is the sir. answer overall. No, sir. So I'm asking about like the limiting agent. mhm. So over here it is 1, right? And below it's 11. You complete your sentences and then turn your mic off. No, sir. I'm asking the above one will be the limiting agent or the below one would be the limiting agent. Can you name those species above below क्या है? What is above? What is below? Sir, we found out one MCR of CO2 and O2, right? 1 and 1/4. The MCR of CH4 is 1. MCR of O2 is 1 by 4. That's correct. Yes, sir. And we concluded that O2 is the limiting reagent. Correct. After that, we found the mass. So over there also, we cannot say that it is a limiting reagent. The 11 grams mass of CO2. Okay, first of all, uh, limiting reagent is only defined. See, what is the definition of limiting reagent? Can you read this? You read it, Zainab? Yes, sir. Okay, so CO2 is what reactant or product? Product. So can this be a limiting reagent? No, sir. Make sense? Yeah, I got it, sir. गॉट इट ना ठीक है चलिए Yeah. सी देखिए मतलब हम जनरली आंसर नहीं बताते तो ऐसे आप लोग ना ऑफेंड मत हो जाइएगा आई वांट यू गाइस टू रीड द टेक्स्ट एंड देन अंडरस्टैंड ऑन योर ओन जब जितना से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना लाइक यू डोंट नीड अ टीचर देन यू आर रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन यू आर अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ दैट इज इवन बेटर ठीक है बट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड दैट आई हैव टू एक्सप्लेन देन आई एक्सप्लेन चलिए so I hope all of you understood this. So this may seem a bit lengthy type of thing because like I have done each and everything very explicitly ठीक है but इसको ऐसे ही लिखिए बिल्कुल ठीक है सो दिस विल सर्व एज अ सैंपल एग्जांपल that you can always look at to understand or to revise the MCR method. Please copy this down. Raise your hand once you're done. And while copying, if you have any doubt, please let me know. No, it is not necessary. You can calculate H2O first and then you can calculate CO2.
Please raise your hand if you're done writing till here. O2 is allowed. Okay, okay, fine. All of you are done till here. Then okay, you need to write these parts. Okay, fine. You can lower your hand. Raise your hand now. If you're done till 9 grams. Just waiting for Zainab. Zainab, let me know once you're done writing. Now, all of you guys can lower your hand. There is one more point that we can do, and in some questions you will be asked to calculate the unreactant amount, unreacted amount. So we will take this equation and then we are going to understand. See here, we have CH4 plus O2, 2O2 gives CO2 plus 2H2O. Okay. We have 16. I'm writing the mass here. Don't write anything. Please listen. 16 grams. This is 16 grams. Okay. The number of moles will be equal to what? This is 1 mole. And this will come out as how many moles? 0.5, right? Make sense, everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है अब ध्यान सुनिएगा जरा. Please listen very carefully. If I'm going to read this particular equation and I will read 1 mole of CH4 requires 2 moles of oxygen. Make sense? 1 mole of CH4 requires 2 moles of oxygen. Make sense, everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. This is according to what? This is according to the reaction. Okay? So I'm writing here. You don't need to write. Please understand. According to reaction, 1 mole of CH4 needs 1 mole of oh sorry, my bad, 2 moles of O2. This is according to the reaction. Reality क्या है? Reality है we have 1 mole of CH4. So if we have 1 mole of CH4, we needed 2 moles of O2, but how much do we have? 0.5. बोलो भाई. 0.5. ठीक है? So you can understand, please understand. अब ध्यान सुनिएगा. When we have 1 mole of CH4, we need 2 moles of O2 and gives 1 mole of CO2 and 2 moles of H2. Now, if 1 mole of CH4 is not finding adequate amount of O2, O2 जितना होना चाहिए था, we expected 2 moles, but we have less than that. We expected 2 moles, we have less than that. That means जो हमारा product बनेगा, that will be also not complete in the sense कि CH4 जितना product बना सकता था. For example, CH4 can make 1 mole of CO2, but now since it is having less than 2 moles of O2, अब ये कम बनाएगा. तो O2 is that reagent, O2 is that reactant which limits the potential of reaction. If O2 was more, we would have got more product. Because O2 is less,
and CH4 cannot completely react because 1 mole requires 2 moles, but we have only 0.5. तो obviously बात है, अब जो 1 मोल CH4 से बनना चाहिए था, the amount of product that we should be getting from the 1 mole of CH4 will not be that much. And that is why we call it limiting. ये limit कर देता है reaction के potential को, ठीक है? तो ये तो एक etymology वाली बात होगी. अब यहाँ पे देखते हैं हो क्या है, like reaction कैसे होगा. Now since we have identified कि O2 is less than needed, जितना नीड है उससे कम है, that means O2 will be completely reacted and CH4 will be having some unreacted part present. Yes or no? Some of the CH4 will be unreacted. बात समझ में आ रही है? Tell me guys. You need to say yes or no. Yes, sir. पक्का? जसलीन, सबिहा, शाइमा? Can you explain again? हाँ ठीक है, देखिए आई एम सेइंग O2 is less than needed. ठीक है, O2 is less than needed and in that sense I can say CH4 is more than needed. क्या ख्याल है? Yes, Both sir. of these statement makes, ठीक है. So if CH4 is more than needed, then some CH4 will be unreacted. क्या ख्याल है? If it is more than needed, जितना जरूरत उससे ज्यादा, that means there will be some which is needed, and after that the CH4 will not react. Make sense? Yes, sir. ठीक है. So we need to calculate that unreacted part. How much CH4 is unreacted? तो उसके लिए देखिए, ध्यान सुनिएगा. 2 moles of O2, repeated. 2 moles of O2. बोलो. 2 moles of O2. O2 बोलिए. Not going to say nothing, नहीं समझ में आएगी चीजें, ठीक है. 2 moles of O2 needs 1 mole of CH4. Make sense? Yes, sir. 2 needs 1. ठीक है. 4 needs कितना? 2 को 1 चाहिए, 4 को 3. कितना चाहिए होगा? How much? जसलीन? यार 3. एक दो चीज ना, ये हाँ, ये माइक ऑन करके बोला करें, स्पेस बार दबा के रखें until unless I have heard and I have accepted your answer. 8 नहीं ना, फिर से देखिए. 2 को कितना चाहिए? अरे भाई यूनिटरी मेथड है. 2 रुपए में एक चॉकलेट, 4 रुपए में कितना चॉकलेट? बोलो भाई, व्हाट हैज हैपेंड गाइस? 2 rupees gives you one. हाँ, 2 rupees gives you one chocolate. 4 rupees will give 2. 2, है ना? ऐसे वाली. 2 people need 1 biryani. 4 people will need how many biryani? 2. 2. ठीक है, वेरी गुड. बिरयानी समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए ठीक है, बिरयानी करते हैं. अच्छा, 2 need 1 biryani, so 1 needs how many biryani? Half. हाँ वह भाई, बिरयानी समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, 1 needs half. अब आधा तो होगा नहीं, मतलब बच्चा समझ लो, ऐसे नहीं आधा आदमी करके ले गए हैं बिरयानी खाने के लिए. 0.5 people needs, मतलब बच्चा है कोई. हाउ many बिरयानी? हाउ मच बिरयानी? हो जाएगा, बोलो. टेल मी गाइस. 0. क्वार्टर. अरे वाह, ये तो पूरा रेस्टोरेंट ही चलेगा, क्वार्टर बोल रहे हैं. ठीक है, 0.25. सही है. मेक सेंस दिस? यस और नो? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. ये भाई केमिस्ट्री ऐसा ही है, ठीक है ना? आप लोगों का दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है बिल्कुल. ठीक है, ध्यान से देखिए. 0.5 moles it will need how much? So we had how many moles of O2? 0.5. So 0.5 moles of O2, I will write 0.5 moles of O2 needs 0.25 moles of CH4. ठीक है. So इतना moles of CH4 will be reacted, the rest will be unreacted. ठीक है. So unreacted CH4 is equal to total minus reacted. टोटल था आपके पास 1, रिएक्टेड है आपके पास 0.25, अनरिएक्टेड हो जाएगा आपके पास 0.75 मोल. ठीक है. तो देखिए CH4 का मास कितना होता है? 1 मोल ऑफ CH4 was 16 ग्राम्स, है ना? 16 ग्राम को 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कर सकते हैं.
So this 4 is reacted, these 4 are unreacted. That means in grams it will be 4 plus 4 plus 4, it is equal to 12 grams. ठीक है, अब ये समझ में नहीं आया तो आप लोग को अब हम पता नहीं क्या बोले, बट समझ में आना चाहिए. इसको लिख लीजिए जरा. How many of you guys understood this? That how I got 12 grams? So can you explain the last part again? The 12 grams. No, sir, 0.5 moles of water. This one. ये आपने नहीं समझा था बिरयानी. That I understood, sir. अरे तो भाई वही सेम चीज यहाँ स्टार्ट तो O2 से ही किया था ना. 2 moles of O2 needs 1 mole of CH4. That is in the reaction equation में तो है. Yes, sir, the 12 grams after that. Sorry? Why we minus 0.24? What I have written, tell me. Unreacted. Unreacted SCH4. CH4. So keep your mic on, please. Thank you very much. So total how much CH4 we took? We took 1 mole ना, calculate किया था हमने. Yes. ठीक है. So from 1 mole, some will be reacted. What Yes. will be reacted? जितना O2 को जरूरत होगा. So O2 needed 0.25 moles only. Right? Yes, sir. Got it now? Yes, sir. ठीक है. Raise your hand once you're done. Waiting for Jasleen and Zainab. Waiting for Jasleen and Zainab. Jasleen done. ठीक है, चलिए अब हम लोग वापस आते हैं इस सवाल पे. ठीक है. So in this question, you don't have to calculate the MCR or anything because they have given you in moles.
whenever you have grams or something like that, then you need to calculate the MCR. इसमें भी कर सकते हैं, but that MCR method will be a bit lengthier. ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे. ठीक है, देखिए, all of you guys, here we have A plus B2 gives AB. So I can see from the equation, this is balanced chemical equation. As you can see, it does not need to be balanced. We have one here and we have one here. So we can say that 1 mole of A needs 1 mole of B2. तो जब मॉलिक्यूल हो तो B2 रहना चाहिए, एटम्स हो तो 2 moles of मतलब बिकॉज इन 1 mole of B2 you will have 2 moles of B atom. B atoms जो होंगे ना, atoms, they will be 2 moles. ठीक है, in 1 mole of the molecule B2. Make sense? Yes or no? Please tell me. हाँ जी, Yes, so sir. ठीक है, but you will always have molecules only. अब यहाँ पे they are asking identify the limiting reagent if any in the following mission. Limiting reagent identify करना. ठीक है, so we have here 300 atoms of A and 200 molecules of B. ठीक है, तो 300 atoms, ध्यान सुनिएगा, turn your mic on guys, ये जल्दी जल्दी होना चाहिए. ठीक है ना, ध्यान से सुनिए. ठीक है, and then answer me. ठीक है, 1 mole of A needs 1 mole of B2. ठीक है, 2 mole of A needs, बताइए, dash mole of B2. 2. 2. ठीक है, now when I am saying for moles, it is also valid for molecule also, ना, कि 1 molecule of A reacts with 1 molecule of B2 gives AB2, है ना, या 1 atom of A reacts with 1 molecule of B2. अब उसी तरह देखिए, 300 atoms of A, 300 needs dash A, sorry, dash B. If you have 300 atoms of A, so how many molecules of B2, या फिर how many molecules of B? 300. 8 को 300, बट है कितना हमारे पास? 200. 200. सो जो कम होगा ना, वही आपको क्या हो जाता है, इट इज द लिमिटिंग रीजन. ठीक है, सो हियर व्हाट इज द लिमिटिंग रीजन? द मॉलिक्यूल्स ऑफ बी या फिर B2 लिख लीजिए ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ बी इज सेम एज B2. मेक सेंस एवरीवन? यस और नो? प्लीज टेल मी. Yes, sir. ठीक है, अच्छा, 2 moles of A needs how many moles of B? बोलो. 2 more Two. of B. 2 moles. 2 moles of B. So B is more, right? Yes. So in this case, A will be the limiting reagent. Make sense? Yes. Okay. 100 atoms of A needs how many molecules of B? 100. 100. So we have the 100. So here we will have no limiting reagent. Make sense? Yes, sir. ठीक है. 5 mole of A needs how many moles of B? 5. 5. लेकिन है कितना? 2.5. 2.5. So what will be the limiting reagent in this case? 2.5 mole. हाँ, B is the limiting reagent, जितना भी होते थे, है ना. अच्छा, 2.5 moles of A requires how many moles of B? 2.5 moles of 2.5. So how much do we have here now? 2.5. नहीं, मोल B कितना है? B. 5. So B is more than A ना, मतलब B जितना चाहिए था उससे ज्यादा है. That means in this case A is less. A यहाँ पे क्या हो जाएगा? limiting reagent. Limiting reagent. ठीक है. All of you understood this point? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, प्लीज कॉपी दिस डाउन. बस यहाँ पे लिमिटिंग रीजन आइडेंटिफाई करना है, नथिंग एल्स. देन वी विल लुक एट अनदर क्वेश्चन. No, atoms and molecules are not same thing.
Done, everyone? Saima, can you please turn your mic on? थोड़ा सा आप explain करेंगे, like in the reaction itself, it is atom of A and molecule of B, na? Yes. Yes, Saima, you understood now? Yes, sir. Okay. All of you done writing? Anyone still writing? Please let me know. So I'm Sir, writing. I'm writing. Okay, okay. Sabiha and Shaima waiting for you guys. And Sabiha, Alt and Y. Alt plus Y. Waiting for Shaima. Zainab is done, I guess. I think everyone is done now. Actually, moving on to another question. अब एक चीज और याद कीजिएगा. Can somebody just remind me about molarity? What is molarity? Molarity is equal to अरे बोलो भाई, molarity is equal to अरे 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 oh my god. Molarity it is equal to sorry M1V1 plus no M2. Zainab नहीं no Zainab कब पढ़ा था आपने लास्ट molarity टिल में? भाई ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप लोग हफ्ते हफ्ते में नोटबुक खोल रहे हैं. नोटबुक अभी खोल के बताओ आंसर. उतना तो होना चाहिए कम से कम कि आंसर बता पाए. Number of moles of solute per volume. Number of moles of solute divided by volume. So from here I can write number of moles is equal to molarity into volume.
Make sense? Yes or no, tell me. Yes, sir. ठीक है. अब यहाँ पे एक सवाल लिखिएगा. ठीक है. सो यू कैन सी दैट इस फॉर्मूला को याद रखिए. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. है ना. यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम हियर आल्सो. Number of moles will generally you will remember given mass by molar mass. That is true, but when you have been given a solution with molarity and volume, then we use this formula. ठीक है. तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. Please write a question. 250 ml of 0.5 molar sodium sulfate. Sodium sulfate क्या होता है? Na2SO4. Solution is added to an aqueous solution containing 10 gram of BaCl2, resulting in the formation of BaSO4. ठीक है. How many moles of, या फिर ऐसे कर लीजिए, how many moles नहीं, calculate the amount of BaSO4 formed. ठीक है. सो व्हाट डू वी हैव. अब देखिए ये रिएक्शन आप लोग को आना चाहिए. इफ यू डोंट नो द रिएक्शन आप लोग को आना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 250 ml of 0.5 molar Na2SO4. So as soon as you see a number ना, you try to write it down. Please don't write now. अभी आराम से भी देखिए आप, फिर आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है ना. You write. I hope you have written the question. Now once I explain it to you guys ना, तब आप अपने नोटबुक में सवाल को देखिए और उसके बाद try to do how I have done. And whenever you need help, then only look at the screen. ठीक है. उससे पहले स्क्रीन मत देखिए. ध्यान सुनिएगा जरा. This is important. I hope आपको समझ में आ रहा होगा कि it is going to be a bit lengthy. है ना. क्या सवाल है ये. एक एक करके देखते हैं. 250 ml of 0.5 molar Na2SO4. That means they have given some things about Na2SO4. Na2SO4. What they have given? They have given us the volume that is equal to 250 ml. Fine. And they have given the molarity that is equal to 0.5 molar. So as soon as you got the volume and molarity, here only I will calculate the number of moles also. Because so when they are giving you molarity and volume, assume that they have given you and they think that they have given you the number of moles also. So number of moles will be equal to how much? 0.5, that is the molarity multiplied by volume. The volume should be in liters because in molarity, volume should be in liters. Hai na? So 250 ml will be 0.25. So if you multiply both of these numbers, it will be 125. And there are three digits after decimal point. यहाँ पे भी 0.125 moles बनाए. यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes or no, please tell me. All of you understood till here? Yes, sir. ठीक है. अच्छा यहाँ पे ना they should give you the molar weight of BaCl2. ये शायद 208 होता है. ठीक है. Don't remember exactly, but ठीक है. I think it is 108. So regarding BaCl2, they have given you 10 grams. तो mass दिया हुआ उन्होंने. Mass of BaCl2, it is equal to what? 10 grams. But as soon as you have the mass and molar mass also, then आप यहाँ पे क्या calculate कीजिएगा? Number of moles. Number of moles will be 10 upon 208. Now this fraction, it doesn't seem to be very easy to calculate, so I will leave it here. ठीक है. उसके बाद they are saying that Na2SO4 is going to react with BaCl2 and form BaSO4. So let us do this reaction. ठीक है. इस reaction को करते हैं. So you have Na2SO4
plus BaCl2. It will give what? Positive negative करना आता है आपको ना. This is positive part, this is negative part, this is positive part, this is negative part. So from the positive part of here Na will react with the positive negative part of Cl. क्या मिल जाएगा आपको? NaCl मिलेगा. Plus you will have BaSO4. ठीक है, तो बैलेंस करते हैं. देयर आर 2 सोडियम्स, तो 2 सोडियम के यहाँ पे रखा हमने. देयर इज 1 सल्फर 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 1 बेरियम 1 बेरियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन. सो द रिएक्शन इज बैलेंस. कैन यू प्लीज सी? Yes, sir. ठीक है. नाउ we have been given, ध्यान सुनिएगा, we have been given the amount of Na2SO4 also and BaCl2. We have the amount of 2 reactants. So whenever we have the amount of 2 reactant, what's the first thing we calculate? क्या कैलकुलेट करते बताइए जरा. When the amount of 2 or more reactant is given, then नोट लिखा है भाई, रट लो उस चीज को, बोलो. When we have been given the amount of 2 or more reactants, then what do we do? क्या लिख रहे हैं क्या आप लोग? बोलो भाई. जसलीन, सबीहा, शाइमा. Calculate the MCR of each reactant. ठीक है. So first of all, we will calculate the MCR of Na2SO4. ठीक है, Na2SO4. This will be equal to the number of moles of Na2SO4 divided by its stoichiometric coefficient. Divided by its stoichiometric coefficient. This is equal to number of moles 0.125 था हमारे पास, और कोएफिशिएंट तो 1 था हमारे पास. ठीक है. So it is like this only. Now we have MCR of BaCl2. This was again number of moles of BaCl2 divided by the coefficient. The number of moles of BaCl2 divided by coefficient. अभी आप लोग सिर्फ सुनिएगा. Number of moles of BaCl2, if you remember, we had just written here, it was how much? 10/208. ठीक है, 10/208. अब ये तो कंपेयर कीजिए आप लोग, कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर आप लोग कंपेयर कर पाए. देखिए, द इजी वे ऑफ कंपेयरिंग दिस वुड बी, आई विल कन्वर्ट दिस टू 125 अपॉन हाउ मच? 1000. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी. बोथ ऑफ दीज आर सेम थिंग ना? बोलो भाई. अरे रे रे, बोलो यस और नो. जसलीन, सबीहा, शाइमा, जैनब. Yes, sir. 0.125 is sir. equal to, हाँ, थैंक यू वेरी मच. नाउ आई वांट टू कंपेयर दीज टू नंबर. तो थोड़ा सा हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. आई होप दिस विल नॉट चेंज एनीथिंग. सो दिस विल बी इक्वल टू 50 अपॉन, ये कितना हो जाएगा? 8 5 40, 1040. मेक सेंस? बोलिए. Yes, sir. डस? ठीक है. अब नाउ आई कैन कंपेयर. आई डोंट नीड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एमसीआर, उससे कुछ होना नहीं वाला हमारा. इस वजह से आई जस्ट नीड सम अप्रोक्सीमेशन, कौन ज्यादा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें, देन आई कैन सी दैट द डिनोमिनेटर्स आर ऑलमोस्ट सेम, बट द न्यूमरेटर ऑफ Na2SO4 इज वेरी हाई. सो आई कैन से दैट दिस इज द लिमिटिंग रीजन. क्या ख्याल है? दिस इज स्मॉलर वैल्यू. डज दैट मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी. Yes, sir. है ना? What anyone has doubt, please see. The denominators are all, they are quite comparable, but the numerator of Na2SO4 is very high. So obviously the value of 125 upon 1000 will be very high. Okay, so I can say that MCR में Na2SO4 is greater than BaCl2. Therefore, BaCl2 is limiting reagent. Now I will write MCR of BaCl2 is equal to MCR of BaSO4, barium sulfide. ठीक है. So MCR of BaCl2 we have just got it as, इसको मत लीजिएगा, तो बहुत बड़ा वैल्यू ना, 10/208 ले लीजिए, the smaller one. 10/208 is equal to for BaSO4 what we will do, number of moles पहले निकालते हैं, उसके बाद फिर मास निकाल लेंगे. ठीक है. MCR क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट तो 1 है खैर इसका, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4 विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी इक्वल टू 10/208. करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. Mass of BaSO4 is equal to the number of moles multiplied by the molar mass of BaSO4. मोलर मास 233 होता है इसका.
10 upon 208 multiplied by 233. You will multiply these things, you will get a number and that will be in grams. इस तरह से आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है. वी हैव डन द सेम थिंग जो कि हम लोगों ने कहा किया था. In the CH4 reaction, we also did the same thing. Yes or no? Please tell me. Jasleen, Sabiha, Zainab, Shaima. Yes, sir. Right? यहाँ पे भी, but question देख रहे कितना दोनों अलग है? Can you see that questions are very different? Yes or no? Yes, sir. ठीक है, but the concept is going to be same. वही सेम कंसेप्ट आपको यूज करना है, उसी से निकल जाएगा. मोलर वेट ऑफ BaSO4 is equal to 233. These are lengthy. अभी आपको लेंदी लग रहा होगा ये, बिकॉज हमने सब कुछ खोल खोल के लिखा हुआ है. ठीक है, चलिए, आई थिंक यू हैव रिटन द क्वेश्चन. You can start doing from here. चलिए, please start copying this down, but don't copy कि ऐसे ना Na2SO4 volume VOL is equal to 250 ml 250 ml, ऐसा नहीं कीजिए. Try to understand that what I have done here in this part of the in this part, what I have done, I have read the question and then I have wrote the values and then I calculated this part, जो कि हम red से इसको denote कर देते हैं. ठीक है, this is something that I have calculated. This is also something that I have calculated. ठीक है, तो उसी तरह से कीजिए. फिर उसके बाद आई विल राइट रिएक्शन, उसके बाद आई विल कैलकुलेट MCR. इस तरह से इफ यू आर गोइंग टू रिवाइंड दिस इन योर हेड देन इट्स गोइंग टू हेल्प यू. अगर आप सिर्फ कॉपी कर लीजिएगा उससे कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है, चलिए, आई होप यू गाइस आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, डू इट ऑन योर ओन एंड लुक एट द स्क्रीन ओनली व्हेन नीडेड. If you guys are done till here, please raise your hand. Just means, okay, I think if you're done till MCR of NaSO4 is greater than BaCl2, please raise your hand. Shaima and Sabia, you have already raised hand. Just waiting for Zainab now. I think Zainab must have also done till reaction at least. Okay. So I think you guys can copy now. Calculate the amount of BaSO4 and send the answers on my chat. Send the answer on my chat. What's the amount you are getting? 10 upon 208 into 233.
Yes, Shaima, that is correct. Very good. Guys, can you please send the answers, whatever you have done till now? I mean, don't send me right now. Just send me the answer for mass of BaSO4. Zainab, if you calculate more accurately, it will be a bit more, a little bit more, not too much. It's just incorrect. Something how got disconnected. Okay. Okay. 11.2 is correct answer. Yes, sir. 11.2. Okay. Okay. Will you try this question? You need to balance this equation, okay? देखिए इसमें ना लाइक एनसीईआरटी पता नहीं आपके एनसीईआरटी में देखिए एक बार आंसर ना इसमें थोड़ा सा अलग आ जाता है बिकॉज हियर दे आर सेइंग दैट डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया according to the following chemical equation. So it is not very clear that they want us to consider this particular chemical equation or they want us to balance it. But I think textbook may, at least in some previous version, the answer was such that the equation is not balanced. ठीक है बट आप लोग हमेशा बैलेंस करके ही कीजिएगा ठीक है इन एनी एग्जामिनेशन चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो चाहे आपकी स्कूल के एग्जामिनेशन हो they will always ask you guys to do stoichiometric calculations and in that you will have to balance the equation without balancing it will not be there तो सबसे पहले आपको ना बस एक चीज बताना उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे आप लोग के लिए you need to tell me what is the limiting reagent here calculate the mass of ammonia produced if 2 into 10 to the power 3 grams of dinitrogen reacts with 1 into 10 to the power 3 that means 1 kg of dihydrogen okay so you have been given the amount of both the reactants calculate the mcr first of all balance this calculate the mcr and tell me what is the limiting reagent which one is limiting reagent बस आपको ये बताना है बाकी you are going to do it in your home
I think you must be near the answer by now. If you are not near the answer by now, please raise your hand. I can help you. Isleen, Shaima, and Zainab. Yes, Shaima, what problem you are having? Tell me. Please turn your mic on, by the way. Don't message the chat. समझ में ही नहीं आता हमको. Yes, Shaima. Yes, sir. What problem are you having? तो चलो भाई माइक ऑन करो. बैलेंस इक्वेशन तो बताओ. ये माइक ऑफ करने का क्या मतलब बनता है यार? आस्किंग डाउट. हाँ, tell me the balanced chemical reaction. Just check my patience, you know that. There, I forgot the balance equation. तो भूलिएगा ना भाई ये बात है. Anyone who balanced the equation, please tell me quickly. So is it 3 No, but what? 3 and 2? बैलेंस. अच्छा, अभी आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं भाई. How many nitrogens? Keep your mic on, yeah. Keep your mic on. How many nitrogen in the reactant? 2. How many nitrogen in the product? 2. We don't need to balance the nitrogen. How many hydrogen in the reactant? 2. How many hydrogen in the product? 6. So 3 here. बस हो गया. क्या यार, करो भाई, जल्दी करो. ये तो करके जाइएगा, छुट्टी नहीं मिलेगी नहीं तो. You have to tell me the limiting reagent. Such a easy method I have taught you guys. MCR करना है. You need to do the MCR thing. You have 2 into 10 to the power 3. ठीक है, 2000 ग्राम है डाई नाइट्रोजन का और 1000 ग्राम है डाई हाइड्रोजन का. डू यू नो द मोलर मास ऑफ N2 and H2? कॉपी में भी होगा आपकी नोटबुक में. N2. भाई आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल हमको साफ पता चल रहा है. अभी टेस्ट हुआ ना, टेस्ट में देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं हम लोग के. N2 is nitrogen is 14 and 2 nitrogen will be 28. H2 1 hydrogen is 1 gram, so H2 will be 2 grams. If I don't see how I am doing things, na, I am writing everything, MCR of this, MCR of that. Then I write the formula, then I plug in the values. I need all of you guys to just follow the same thing, yaar. ये आप लोग प्रैक्टिस पिछले क्लास की कर लेते ना नोटबुक में से कम. If you did only the problems in, because it is MCR only, na. I mean limiting reagent. If you have even limiting reagent, you just need to calculate the MCR of one more thing and then just compare. There is nothing new type of calculation यहाँ पे. बस एक स्टेप बढ़ा है और कुछ नहीं हुआ है.
if you practice whatever questions I did in the last lecture, तो आज problem ही नहीं होती. हमने Justine, what did I ask? Okay, Shaima's answer. Justine, what did I? Yes, Justine. Justine, turn your mic on. Bhai, when I Yes, asked your name, what did I ask? I asked, na. What did I ask something or I did not ask anything? Tell me. Did I ask something to calculate? What did I ask to calculate? MCR of No, the I asked to calculate the limiting reagent. वो कह रहे थे हम इतनी देर से ना कि limiting reagent भेजिए आप हमें. Shaima, can you show the work? I need to see the work. Justine, or like whoever is doing, please show me the work. okay, sir. You can send the photo and then you can leave. See, guys, I'm again telling you, this is something that you are going to face a lot in this class if you are not going to revise. Revision का मतलब पढ़ना नहीं होता है, ठीक है ना? Please don't say that I've revised the last lecture and you have just read the last lecture's notes. You need to redo all the questions because there is no question that you are able to do in the classes right now. Whatever question is in the class presented that I am only doing, you're just copying those questions. Okay, so effectively you are not learning anything until unless you are able to do those questions on your own. Fine. So the main thing that you have to do in revision is that you should be able to do the question that we have done in the class on your own without looking at the answers. Initially चाहे रट के आप उसको कर लें अभी, ठीक है? But you should be able to do that. Slowly it will come. If you have some problem conceptually, then you can ask me. I'm waiting for the answer, bhai. Zainab, Jasleen. So no, send me the answer, like how you are getting that answer. Zainab, send me the photo. Show me the calculation. Show me your work. Justine, I'm asking you also. You have given the answers in grams and everything. Show me your work. By the way, Sabiha is not here, so I will just turn off the chat. You can turn on your mic and let me know. Justine, how much time do I need to wait? I need the answer. Like I need to see the work. Justine, please turn your mic on. Because Shaima, I have got yours. You can leave the class. If there is something that I need to tell you, I will tell in the WhatsApp itself. Okay? Yes, sir. Justine, I need to see the work. Justine का ही आंसर नहीं आ रहा है. Just यार इसको थोड़ा सा ठीक करके भेजा करे ना. ऐसे साइड से आपने भेज दिया. It is difficult to see in the laptop. N2 plus H2, 3H2 gives NH3. MCR of N2 is equal to. Why have you not written the formulas, Anna? Turn your mic on, Zainab. No, I did it directly. Directly. पढ़िए जरा. क्या होता है MCR?
कीप योर माइक ऑन, बोलिए। MCR इज इक्वल टू, बोलो। MCR of N2 is equal to 28 by 2.0. नो 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 नो, फॉर्मूला बोलो ना भाई, आप तो डायरेक्टली अभी भी कर रहे हैं। फॉर्मूला बोलिए, तब उसके बाद ही ना प्लग इन कीजिएगा वैल्यूज। फॉर्मूला बोलिए अगर आपको याद है तो। MCR N of N2 mass of MCR of N2